चाहिए 5 मिनट और हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कंप्लीट किया था और आई थिंक केयू डेरिवेशन कंप्लीट कर दिए। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं बहुत ही छोटा सा पार्ट जिसको मैं डायपोल बोलता हूँ वो पार्ट में स्किप आउट करूँ तो चैप्टर खत्म। सो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम which is electric charge and field खत्म हो गया। पहला पार्ट मैंने नहीं बोला, मैंने कवर किया डायपोल, और डायपोल नहीं कवर करने का रीजन ये है बिकॉज आई वांट टू कवर डायपोल मतलब पूरा एक साथ, लाइक आई वांट टू कवर डायपोल का फील्ड, डायपोल का टॉर्क, डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी सब एक साथ, बिकॉज दैट्स अ परफेक्ट थिंग टू डू, एक साथ पढ़ना रादर देन टुकड़ों में पढ़ना जो एनसीईआरटी करवाता। इसलिए नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सेकंड चैप्टर टुडे। The second chapter is electrostatic potential and capacitance. तो आज वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट इसके लिए या 2 लेक्चर बैक टू बैक है हमारे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी और मोस्ट प्रॉब्ली लेक्चर के एंड तक हम एनर्जी खत्म कर देंगे। सो आज पोटेंशियल एनर्जी खत्म भी हो जाएगा। ओके, so today we will be starting with a topic called as electrostatic potential energy. मॉडल में डाउट है आप लोग को? ठीक है। What we will do is this. I will start initially the topic first. Then in between जब ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं बीच में ऑफिस 10 मिनट का ब्रेक दूंगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसके पहले मैं डाउट ले लूंगा आपसे। फिर जब हम आएंगे उसके बाद आप लोग क्लास में सॉल्व करोगे एनर्जी के क्वेश्चन, तब तक वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। फिर आप देख लेना, समझ लेना, फोटो ले लेना, आपका काम खत्म, मेरा काम खत्म, आप कंटिन्यू करें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यस, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यूएशन भी एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हमने फोर्स कंप्लीट किया, हमने फील्ड कंप्लीट किया, हमने फ्लक्स कंप्लीट किया, तो 3 मेजर टॉपिक और था। अब एनर्जी कंप्लीट, एनर्जी के बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाद डायपोल, और बस डायपोल इज डन, देन हम कैपेसिटर। तभी भी चैप्टर खत्म नहीं होता, फिर कैपेसिटर के टॉपिक आते हैं। एग्जाम में लास्ट लेक्चर तक का पार्ट है, आज जो पढ़ाऊंगा वो लास्ट लेक्चर तक सब आएगा। ओके, गिव द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ईपी, और इसका जो सिंबल है पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल है वो यू है। चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से है, बट हमारे लिए तो सेम कंटिन्यूएशन। यस, ये आप लोगों ने ठीक है। स्टार्ट राइटिंग विद द पॉइंट। देखो पॉइंट नंबर 1, potential energy of a system of particles, potential energy of a system of particles is defined
conservative field. Is defined only in conservative fields. Next, EPE, short form EPE is defined in two ways. EPE is defined in two ways. पहला, interaction energy. पहला, interaction energy of a system of charged particles. Interaction energy of a system of charged particles. दूसरा, self energy. Self energy of a charged object. Self energy of a charged object. Okay. मेरे हिसाब से मुझे नहीं पता आप लोग को ये चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग कैसा डेवलप हुआ है, ठीक है? वो थोड़ा मुझे नए साल में आइडिया लगेगा फर्स्ट 2 वीक्स में, ठीक? उसका मैं आपको नेक्स्ट वीक में आइडिया दूंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना आता है नहीं आता, पर फॉर नाउ उतना बता सकता हूँ कि अगर अभी तक का पार्ट थोड़ा टफ लगा हो इनके फॉर दिस, देन आगे का पार्ट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी सबसे आसान पार्ट इस चैप्टर का। और अगर ग्रेविटेशन की चीजें याद हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि सारे फॉर्मूला वहां से उठा के यहाँ पे अप्लाई करो, सारे सम्स वहां से उठा के यहाँ पे अप्लाई करो। बस फॉर्मूला में आपको ध्यान देना है, जो कन्वर्जन हम करते हैं वही करना है, बाकी एवरीथिंग इज मतलब ट्रू, है ना? तो बहुत आसान होगा। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, हमने डिराइव भी किया था, पर डेरिवेशन वापस करना पड़ेगा रिगार्डिंग इंटरेक्शन एनर्जी का। सेल्फ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सो इसके लिए मैं फॉर्मूला दूंगा, बट ये जो डेरिवेशन मैं कराऊंगा ये डेरिवेशन इसके लिए करना पड़ेगा बिकॉज ये कोर्स में भी आता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरेक्शन। सो सबसे पहले लिखो, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरेक्शन एनर्जी। और इंटरेक्शन एनर्जी में सबसे पहला है सिस्टम ऑफ टू चार्ज। और इंटरेक्शन एनर्जी में सबसे पहला क्या? सिस्टम ऑफ टू चार्ज। Okay, so इसमें we have to write the definition. So please write out the definition. It is defined as the external work required to assemble the particles from infinity to a given configuration. Or एक बार, it is defined as the external work required to assemble the particles from infinity to a क्या लिखा है? Given configuration.
नाउ कंसीडर करते हैं कि ए पॉइंट है जहां पे मैंने प्लस q चार्ज रखा है, एंड देन देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस जहां पे पॉइंट बी है. द पॉइंट बी इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ए, और इसी लाइन के आगे यू हैव अ इंफिनिटी, और इस इंफिनिटी पे यू हैव केप्ट अ चार्ज, and now you want this charge to move from infinity to b, बराबर. तो उसमें जितना वर्क डन हम करेंगे, that work done will be nothing but the potential energy. That's the point. I think this was the exact thing जो हमने ग्रेविटेशन में किया. कोई नहीं. So डेरिवेशन को थोड़ा रिकॉल करते हैं. हम करते क्या थे? हम क्या करते थे, q से जब b पे आ रहे तो बीच में कहीं पे स्टॉप लेते थे. So the stop, let us say, was at a point c, जहाँ पे मैंने for very short duration of time में पहुंचा. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अभी जो डिस्टेंस है उसको मैं x लेता था, बिकॉज़ x अभी मेरा वेरिएबल है. फिर मैं c से थोड़ा सा और आगे जाता था b पे. ये जो डिस्टेंस मैं तय करता था उसको मैं नाम dx देता था. और whenever I am coming from infinity to this point, इस q पे इस कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स लगते जा रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है. यस सर. एंड द डिस्प्लेसमेंट जो मैं कर रहा हूं वो मेरा लेफ्ट डायरेक्शन. यस. So this is the direction of the displacement and this is the direction of electrostatic force. So from point C to point D, the amount of work done will be dW, because मैं बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ तो वर्क भी छोटा होगा. That dW will be nothing but, if I write in the dot product form, then it should be f dot dx. So when I remove the dot product, it should be f dx cos theta. Yes, very good. और यहाँ पे ये f e है और ये भी मेरे पास f e है. Now if I substitute the values, then f e is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught q by x square dx, और ये हो जाएगा cos 180. cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1. सो फाइनली मेरा जो dw आएगा वो कुछ ऐसा लिखना चाहिए, माइनस ऑफ q by 4 pi epsilon naught dx by x square. Then I should do integration to find the total work done. So इसको मैं 0 से w लिख सकता हूँ, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास इंफिनिटी का लिमिट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा डिस्टेंस इनफाइनाइट है. और मैं कहां पे पहुंचा, b पर. सो डिस्टेंस कितना होगा, r. दिस विल टर्न आउट टू बी w. So I can say w should be equal to minus q by 4 pi epsilon naught will remain as it is. Or the integration of 1 by x square will be minus 1 by x. अच्छा कैसा है वो नहीं बताऊं चलेगा. So this is r, this is infinite. This minus and this minus will cancel out. फिर अपर लिमिट डालेंगे तो 1 by r आएगा, minus 1 by infinity आएगा. 1 by infinity की वैल्यू क्या होगी, 0. So the final answer is going to be q by 4 pi epsilon naught r. And this work done will be stored as the potential energy of two charge system, and this is nothing but u, which is equal to क्या होगा बेटा, 1/4 pi epsilon naught q by r. This is the formula for potential energy of two charge system, and this entire derivation comes for 3 marks. This is your fourth derivation, fourth mark. अभी तक मैं 4 derivation करा चुका हूँ. पहले 3 मैंने जो करवाए थे तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था, और ये अभी मैंने जो करवाया वो आपका फोर्थ. सबको ध्यान से समझ में आया. ओके, एनी डाउट इन द डेरिवेशन पार्ट, बस उसको समझा दे पक्का. ठीक है, लिख लो इसे. फिर आगे एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
नहीं फोर्स, अच्छा एक चीज समझ लेना, हम लोग यहाँ पे मैं समझा जो तो बता रहा हूँ, बट एक चीज समझनी है, जब हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे ला रहे हैं, सो टेक्निकली हम लेके आ रहे हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नहीं आया, ये समझ में आया? तो मेरे पे जो फोर्स लगेगा वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगेगा, जो से ज्यादा होना चाहिए। हाँ तो ऐसे लगेगा क्योंकि और तो कोई लगेगा नहीं बेटा, तो उस एफी का डायरेक्शन और डीएक्स का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट ही होंगे डेफिनेटली, सो उस हिसाब से एब्सोल्युटली करेक्ट है, एंड दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब है ना जो तू बता रहा है उस पे अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो वर्क डन हम करते हैं वो दो तरीके का हो सकता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, ये एक्शन हो सकता है। दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम सिंपल एक सिस्टम या रूल बनाते हैं। अगर हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स पूछा जाए, एक्सटर्नल वर्क डन पूछा जाए, तो हम उस केस में फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो भी मैंने हाँ बराबर, वो हमेशा याद रखना, वो ही हमारा करेक्ट है। सो वर्क डन के लिए अगर एक्सटर्नल फोर्स पूछेगा तो यूएफ माइनस यूआई करेंगे, और अगर तेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछेंगे तो यूआई माइनस यूएफ करेंगे, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस का वो माइनस ऑफ एच, यस वही लॉजिक। हो गया सबका? ओके, नोट लिखना, नोट का पॉइंट 1, U is a scalar quantity, U is a scalar quantity, so we have to substitute the value of charges with sign. We have to substitute the value of charges with sign. इसके पहले कभी हमें इशू नहीं आया था इन ग्रेविटेशन हम लोगों ने
पोटेंशियल एनर्जी को डेफिनेशन के वाइज माइनस जीएमएम बाय आर, और यहाँ पे एक्चुअली में हम माइनस यूज नहीं करते यू, मैं को क्या यूज कर रहे हैं के क्यू बाय। तो अब जब के क्यू बाय करेंगे ना तो दो चीज पॉसिबल है, दोनों चार्ज पॉजिटिव दोनों चार्ज नेगेटिव, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव। तो अब से आपकी एनर्जी नेगेटिव में भी आना स्टार्ट हो सकती है और पॉजिटिव में भी आना स्टार्ट हो सकती है, सही है। तो दोनों पॉसिबल है, ओके। तो ये पहला आपका लर्निंग है। दूसरा लर्निंग लिखो, नेक्स्ट लिखना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम लिखेंगे यूएस माइनस यूआई, एंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको आप लिखोगे यूआई माइनस। अगर एक्सटर्नल पूछा है तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछा है तो इनिशियल माइनस फाइनल करना है। तो यहाँ से रिलेशन आता है कि एक्सटर्नल और इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन में जो डिफरेंस है वो माइनस। जब भी मैं यहाँ पे यूएफ और यूआई लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये सिस्टम के बारे में बात होती है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट द टू चार्ज, इट कैन बी मोर देन टू चार्ज, ओके। तो वो आगे है, अभी मैं इसके बात का बात करूँगा। अच्छा, वैसे आई डोंट नो ये पता होना है कि बट स्टिल ऐसा यूनिट इसका यूज है, बराबर है। बट समटाइम्स आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली ये यूज करता है सबसे ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? एंड 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19 joules. So conversion is important because many of times answer तो जुड़ में ही आया तुम्हारा, but options electron volt या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आया उसको डिवाइड करना पड़ेगा by this value, and I think this is nothing but the charge of electron. तो ये भी लिख सकते हैं, this is the conversion 1 electron volt is 1.6 into 10 raised to minus 19. ओके, अब आपने लिखा था सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, यस और नो? द सेकंड इज सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। सो द नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। अभी भी दिस इज द टॉपिक ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी, ये समझ में आया होगा। सो इसमें लिखना, इन दिस केस द इंटरेक्शन एनर्जी in this case the interaction energy in this case the interaction energy can be given by sum of interaction energy SUM वाला था, ठीक है, sum of interaction energy of all the pairs of particles. सम के बाद interaction energy, sum of interaction energy of all the pairs of the particles. इनके जो बच्चे भूल गए थे उनके लिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ट्रायंगुलर सिस्टम, है ना, और मुझे बोला गया कि फाइंड करो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो मुझे सारे कॉम्बिनेशन लिखने होते हैं। तो अगर मैं सारे कॉम्बिनेशन इसमें लिखूं तो इट शुड बी Q1 Q2 by R1 plus Q1 Q3 by R2 plus Q2 Q3 by R। आई थिंक ये सेम चीज हम ग्रेजुएशन में भी करते थे, अभी भी नहीं चाहिए। हाँ, बस याद ये रखना है, ग्रेविटेशन में कभी साइन का दिक्कत नहीं आता था। इसमें मान लो ये Q माइनस Q है, तो वो साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करके ही करो, है ना। तो मैनी ऑफ टाइम चीजें कैंसिल आउट भी हो जाती है,
तो अभी देखना स्टार्ट करोगे कि बहुत बार ये चीजें कम हो जाएंगी। सिमेट्री का यूज करके तुम थोड़ा सा मतलब चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लगेगा कि आप कितना लॉजिक लगा सकते हो। सो दिस एग्जांपल यू कैन राइट इट डाउन। लिखा था मैं okay now the first part of interaction energy is there है ना but then what is the second type of potential energy interaction energy हो गया है ना और एक बचा ना चौथा बचा self energy of a charged object so लिखो the second part self energy of a charged object self energy of a charged object लिखो इसमें it is the total field energy it is the total field energy associated with electric field due to this object in its surrounding associated with electric field due to this object in its surrounding and same is the work done in charging the object in the given final charge configuration and shape from infinity configuration and shape from infinity तो अगर सेल्फ एनर्जी पूछा तो वहां पे दो ऑब्जेक्ट नहीं हो वहां पे चार ऑब्जेक्ट नहीं हो वहां पे सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो वो ऑब्जेक्ट बना कैसे या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आया कहां से और कैसे उसके ऊपर को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं सेल्फ एनर्जी सो सेल्फ एनर्जी में डिस्कशन में अगर आपको याद होगा हमने ग्रेविटेशन में बताया था तो हमने बताया था कि हमारे पास अगर एक स्फीयर है स्फीयर को हमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इंफिनिटी पे फेंक के आए तो वो ऑटोमेटिकली आपके वो स्फीयर बनता है अगर वो स्फीयर बनता है तो कैसे बनता है और कितनी एनर्जी उसको बनाने के लिए लगती है उसी को हमने क्या नाम दिया सेल्फ एनर्जी सेम केस यहां पे भी बस इस केस में मास के पहले हम लोग को चार्ज करना अगे वहां पे भी हमने दो ही स्पेसिफिकली शेप करके रखे थे वन वाज अ हॉलो एंड अनदर वाज अ सॉलिड इसमें भी हमारे पास दो ही है और कोई हमारे पास और नहीं ठीक है सो इसमें पहला केस है देखो सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर
ब्रैकेट में लिखना फॉलो, ब्रैकेट में लिखना फॉलो। वैसे सॉलिड भी हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। द आंसर इज यू सेल्फ इज kq² by 2r। ठीक है, तो फॉर्मूला सेल्फ एनर्जी फॉर स्फेरिकल शेल इज kq² by 2r। वहां पे फॉर्मूला था -gm² by 2r। So we are following your कंडक्टिंग स्फीयर के ना कंडक्टिंग स्फीयर फॉलो हो या सॉलिड हो, क्योंकि चार्ज उसके ऊपर ही है। सो वी रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ पावर। सर होलो और दोनों के लिए ना, हां बेटा, दोनों के लिए है ना, दोनों के कंडक्टर के लिए ट्रू है। तीसरा सॉरी दूसरा सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉर्मली नॉन कंडक्टिंग होता है तो ब्रैकेट में लिख दो सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग बोला तो सॉलिड। फॉर्मूला है इसका 3/5 kq² by r।